हाय गाइज, वेलकम बैक टू फिन लैडर। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाई? बिकॉज मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। आई आस्क्ड यू गाइज कि जीएसटी CFA में जीएसटी अब चार्ज करने वाले हैं, तो CFA इंस्टीट्यूट वालों को बोलो कि हमें जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है एंड उनको मेल करो। Many of you guys texted me कि we have mailed. I was honestly thinking कि काफ़ी सारे लोगों का मेल तो चला गया। Honestly when I made the video ना, तब मुझे लगा था शायद से कुछ हो जाए। काफ़ी सारे लोगों का मेल चला गया and CFA has now come out with an official announcement that input tax credit can be claimed and तरीका भी पता है। I'll explain everything in this video, but first एक special thanks to this person, Pranamya। मतलब I've never seen such a person। आई आस्क्ड यू गाइज कि मेल करो CFA इंस्टीट्यूट को एंड बोलो कि हमें जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। दिस पर्सन वेंट आउट ऑफ हिज वे एंड उनने बोला कि आप मुझे पूरा परफॉर्मा भेजो, मैं सबको बोलूँगा मेल करने को। एंड ही फॉरवर्डेड दैट टेक्स्ट इनटू सो मेनी ग्रुप्स एंड wow, I am amazed. Thank you so much, man. And yes, these people also, thank you so much for doing this. I don't know if this happened because of all of us, but since this has happened, I am so happy. As soon as I heard na ki ye ho gaya, I was like, wow, I have to make a video. And thank you so much, guys. Now let's directly get into कि changes क्या आई हैं CFA Institute की तरफ से। पहले I'll put them here, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो खुद से भी पढ़ सकते हो। बेसिकली स्टार्ट में वो बता रहे हैं कि जीएसटी देना होता है क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं उन लोगों से। उसके बाद फिर दे हैव नाउ रिटन इफ यू आर अ रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर अंडर जीएसटी रेगुलेशन एंड होल्ड अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है देन कहाँ पहुँचा था मैं? ओके, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो सॉरी। But if you have a registration certificate on the date of payment of relevant fees and GST, you are eligible for GST collected to be refunded under OIDAR services. Please contact. उसके बाद फिर they've given an email ID जहाँ पे उन लोगों को हम लोग contact कर सकते हैं and that email ID directly redirects you to India GST query @CFA Institute. So they have set up a complete department, I'll say a complete email ID that will look into this specific matter. Amazing. Now I'll come to some issues also, but अभी तक अगर किसी ने एग्जाम फी भर दी और जीएसटी पे कर दिया है, नो वरीज, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आई कॉन्टैक्टेड CFA इंस्टीट्यूट, आप इन लोगों को मेल करो, उनको अपना पूरा परफॉर्मा दो एंड देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू सबमिट। आई टेल यू द थिंग्स दैट यू हैव टू सबमिट। दिस इज ऑल्सो फॉर दोज पीपल जो आगे जाके फी भरने वाले। सो यू हैव टू पे द फुल फी, बट होगा क्या, यू ऑल द थिंग्स दैट यूल रिक्वायर इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपकी हुई होनी चाहिए किसी मतलब पेरेंट्स में मोस्ट प्रॉब्ली, एंड देन यू विल बी यूजिंग योर CFA इंस्टीट्यूट ID एंड द रिसिप्ट नंबर। सो जब पेमेंट करेंगे तो एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा। These 3 things are required. मैं बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यू हैव टू मेल देम एंड आस्क फॉर एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑल्सो उसके साथ एक रीजन भी लिख देना वाई यू नीड एन इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू। अब देर आर सम इशूज जो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने हाईलाइट किए थे। आई वुड वॉन्ट टू एड्रेस दीज इशूज टू एंड honestly I'm not the best person to talk about these. I completely understand that. If any chartered accountant is watching this video, I contacted my chartered accountant. He told me कि हम लोग ये claim कर सकते हैं, but there are some issues that have been raised by other people and I'm not 100% sure. So if anyone is a qualified chartered accountant, please do let me know in the comment section if I'm wrong at any place. Okay, one very good thing that a person has told me is as per section 17 subsection 5 of CGST, अगर हम लोगों ने पैसे GST के भरे होंगे एंड वो डायरेक्टली कंज्यूमेबल होंगे एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं यूज़ हो रहे होंगे, देन वी कैन नॉट क्लेम द GST इनपुट। तो दैट माई रिबटल वॉज एक्चुअली जो मैं बिजनेस करता हूँ, इट्स मोर ऑफ कोचिंग, प्रोवाइडिंग कोचिंग। एंड वाई एम आई डूइंग CFA लेवल 3 की लेट्स सपोज मुझे फी पे करनी है बिकॉज मुझे लोगों को CFA पढ़ाना है। तो दिस इज एग्जैक्टली फॉर फर्दरेंस ऑफ माई बिजनेस। when someone enrolls for a course with FinLadder, I charge GST to that person and I pay GST to the government. So why can I not claim input for this scenario? One. And second thing, if this is true and मेरा केस रहने दो, what about others? Is it true for others? Because why would CFA Institute consider this thing at all, right?
अगर CFA इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ लाई है, दैट मीन्स दैट दिस थिंग हैज़ सम मेरिट, दैट दिस थिंग हैज़ सम क्लेम कि people can use it for input tax credit also. So I would want to know from a qualified chartered accountant कि is this thing that the person has asked, does it have merits? I do think definitely what this person has said has merits, but is there any loophole to that? So that would be really, really wonderful if someone comes out in front and tells us कि what this is exactly what you can do, this is exactly what you can claim. I do understand कि सब लोग नहीं आएंगे शायद इस purview में, तो I'm so sorry for those people, but I think कुछ लोग आ सकते हैं, and कुछ लोगों का ही अगर भला होगा तो that is also very important. So that's one. Another question that people have is, I had one doubt whether ITC can be claimed on a personal expenditure, and I think इसका आंसर no है. If it's specifically personal and इसका कुछ भी benefit नहीं मिलने वाला है तो it's no. But most of all, like, I want to understand this. We would be getting benefit in future. Now, anyone who ends up doing CFA would be getting benefit of that in future in terms of different things. So can we claim ITC with that regards? And that is a very honest question. I do not know answer to this question. There are many people जिनको अभी instantaneously शायद CFA का benefit ना मिले, but future में उनको मिल सकता है. तो with that regards, can they claim input tax credit? I do not know, because I'm pretty sure मेरे chartered accountant ने मुझे एक complete go through बोला कि when you're paying your next CFA level fee, do claim input tax credit. But what about others? इसका क्या solution होगा? One very important thing, some people asked me section 17(5). I did go to that section, and it specifically mentions health insurance, life insurance, health services, renting, hiring of motor vehicles. It does not mention education. So anything with regards to that, I'm not sure, but anything with regards to that would also be appreciated. So yeah, that was it guys, just an update. Okay, this has happened. Honestly I know बहुत सारे questions अभी भी linger on कर रहे हैं कि क्या अब हम लोग claim कर सकते हैं. इन्होंने option तो दे दिया, but हम लोग claim कर सकते हैं या नहीं, legally कर सकते हैं claim, and that is a very important question. I would want to know, and please, if it is possible for you guys to share this video, that would be absolutely wonderful. And make it reach to other chartered accountants. If you know any chartered accountant, just send this video to that person and ask that person ki, what do you think about it. And if you have any other friends, and yes, I know there are some people who think that they know about things. Wonderful. If you think you know, do comment, but please एक ढंग का comment लिखना कि this is the reason, this is the explanation. And please guys, do read each other's comments and do like and try to understand ki what is the psychology behind the comments, and whether it is correct or not. And if there is any chartered accountant, I would need your help with this video. I tried to contact 2 chartered accountants. One is my personal chartered accountant, and one more person. They both are more or less on the same side, but yes, I know there are many other people who are saying कि नहीं कर सकते. तो yes, I completely understand, completely get your point. तो please अच्छे से mention करना कि why we cannot do it, and what are the specific instances in which we can do it, because there are many kinds of people. Some might fall in one category, some might fall in another category, some might be doing it via their company. So would their company be paying CGST, like claiming GST input? वैसा क्या scenario रहेगा? तो बहुत सारी cases हैं. तो if it is possible for you, I would genuinely want you to do that, because किसी और की help होगी and बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा. But this was just a quick update. Best of luck. Hope to see you in the next video. And here are some videos on CFA. Do watch them. But yes, do read the comment section. It would be important. I think it would be the most important.